So this is the question number 19 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic user defined function in Python. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked what will be the flow of execution of this particular code. So this is a very easy question. If you have seen our previous video, you will be able to solve it in just a matter of seconds. However, let's see what will be the flow of execution of this one. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इट विल गो टू द लाइन नंबर 1 पे क्या है आपका एक कमेंट है, क्या कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा, इसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा. इट सिमिलरली आफ्टर द वर्ड्स इट विल गो टू लाइन नंबर 2. लाइन नंबर 2 पे क्या है, आपकी फंक्शन डेफिनेशन है. हाउएवर जो आपका इंटरप्रेटर है इसको क्या करेगा, नोट डाउन कर लेगा कि फंक्शन डेफिनेशन इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर है, पर इसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा. इट विल गो टू अगेन लाइन नंबर 4. लाइन नंबर 4 पे क्या है, आपका एक्स की वैल्यू क्या है, 3 डिफाइंड है. आफ्टर लाइन नंबर 4 इट विल गो टू लाइन नंबर 5. लाइन नंबर 5 पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा आपका एक्स. आफ्टर लाइन नंबर 5 इट विल गो टू लाइन नंबर 6. लाइन नंबर 6 पे क्या कर रहे हो, आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो. इफ यू रिमेंबर, आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, उस मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस करेगा एंड इट विल गो टू लाइन नंबर 2. अब लाइन नंबर 2 पे क्या होगा, आपका जो एक्स की वैल्यू आपने पास करी है स्मॉल एक्स की, इट विल बी मैप टू कैपिटल एक्स. नाउ आफ्टर लाइन नंबर 2 इट विल गो टू लाइन नंबर 3. After line number 3, since there is a no more line in the function, it will go to the line जहां पे function आपका call हुआ था. So it means it will go back to line number 6. After line number 6, it will go back to line number 7, and that will be the end of your program. Hence, for this one, this will be your flow of execution of this particular code. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to write down in the comment box what will be the flow of execution of this particular code. Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then, thanks for your time.